Hello and Assalamu alaikum. My name is Samar Hassan and I'm the founder of Epiphany. A lot of you already know me. For the ones who don't, we're going to be conducting this session in Urdu and English mix. So मेरा नाम समर हसन है और मैं Epiphany की founder हूँ. और आज का हमारा session बहुत special है. It's called Smashing It. So while we wait for Shandana, she just walked into her house, so she's going to be running a little bit late. I thought at least I would start by giving you guys a brief on what Smashing It is and why we started it. So Smashing It began back in 2017. This is year one of when I started Epiphany. So बिल्कुल नया नया मैंने शुरू किया था Epiphany और मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम women रोल मॉडल्स को हाईलाइट करें. क्यों हाईलाइट करें इसकी ऑब्वियसली सर्टन रीजंस हैं. हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे ग्लोबली in 2019, so I have some figures as well for you guys. So in 2019, less than half, that means 47.7% of all women participated in the labor force, which was a decrease from 50.9% in 1990. Okay, so technically we've actually become even less participative. We're participating even less in the global workforce. Then when you look at the number of women who hold top executive positions, so last year was a record high for Fortune 500 companies because they reported 33 women CEOs, which is the highest ever, right? But is that good enough? Absolutely not. Then let's look at the numbers from Pakistan. In Pakistan, women's participation in the labor workforce used to be 23.8%. Now it's gone up to 26%. But obviously, considering we are 50% of the total workforce, I mean, 50% of the population in the country is women, comprises of women. Obviously, the numbers are far too less. So these were some of the reasons why we decided that we should have series of sessions on smashing it, not just breaking the glass ceiling anymore, but actually just, smashing it to pieces and really highlighting strong women role models and what it took for them to reach the places that they have in their careers. What sacrifices they've had to make along the way, what challenges they were able to overcome along the way. So the objective behind Smashing It was really to highlight female role models. Initially, we wanted to highlight, I don't want to call them ordinary, but what I mean by ordinary is that they're not particularly famous. The idea was to pick up women who are just like you and me, your neighbor next door, but who had remarkable careers and really highlighting new, fresh faces from the country, from Pakistan. And now it has evolved. So we think that it is also very, very inspirational to have women who are actually famous as well. So it's not necessary that it has to be women who are not so well known. That has power in itself. I'll tell you why. Because sometimes people find it easier to connect with them or they seem more relatable. But on the other hand, it is equally important to highlight women who've made really, who've made a lot of waves, because that is inspirational. That is an ambition that other people can aspire to. So with this as a backdrop, right, we started doing Smashing It. And then in the middle, things got really busy and it stopped. So we hosted one session, we had this remarkable turnout. We actually realized there were a few myths also which got busted. So in my brain, I thought that I would have more women than men, because obviously, gender empowerment, women care, what do men know, what men probably don't care. That was my assumption, right? My hypothesis. And it turned out that we actually had more men than women in the room. This is back in 2017. Interestingly enough, a lot of men started opening up to challenges that they face in Pakistan. So a lot of times men also are being steered towards different career paths which they don't necessarily want to take, or being forced to do certain things that perhaps they don't want to do, both at the professional level as well as the personal level. So it was very interesting to see that there was this enormous phenomenal interest from both sides. And here is something which I would like to interject. The objective behind Smashing It is never to make men feel bad or to, claim that, okay, they are doing things which are wrong. It is not about men bashing. It is about celebrating women. And sometimes it is about celebrating all the people who have led to their careers, right? So, I mean, I can tell you, at times my father has been the biggest proponent of whatever I'm trying to do in my life, as compared to my mother. Sometimes she holds me back, right? It's interesting, but she worries about other things and whatever. So, with this as a backdrop, it gives me great pleasure to introduce my guest today. Um,
I want to do this in Urdu as well. So I'm just thinking, कि अगर मैं, if I summarize it in 1 second, in 1 minute, what I just spoke in Urdu, I will probably lose some of my international audience. But okay, so हम smashing it क्यों कर रहे हैं? हम smashing it इसलिए कर रहे हैं because बहुत सारे challenges हैं, बहुत सारी responsibilities होती हैं जो ख़वातीन के ऊपर होती हैं. उनको घर का भी ख्याल करना होता है, बच्चों का भी ख्याल करना होता है, हस्बैंड्स का भी ख्याल करना होता है, फैमिली का भी ख्याल करना होता है, बड़ों का भी ख्याल करना होता है. जैसे जैसे आपके पेरेंट्स ओल्ड होते जाते हैं, उनके भी ख्याल ख़वातीन ही रखती हैं ज़्यादातर. तो इतने सारे बर्डन के साथ जब वो कोशिश करती हैं जॉब में आना, वर्क फोर्स के अंदर आती हैं, तो ज़ाहिर चैलेंजेस होते हैं. नंबर 2, वो कभी कभी वर्क फोर्स में आ ही नहीं पाती. तो जैसे हमने अभी बात की कि 26% जो टोटल वर्क फोर्स में होनी चाहिए ख़वातीन, उनमें से सिर्फ 26% पार्टिसिपेट कर पाती हैं वर्क फोर्स के अंदर, जॉब्स कर पाती हैं. तो ऑब्वियसली ये नंबर बहुत कम है, और जब तक हम सब मिल के उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकती. और अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगी तो आपका ज़ाहिर है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता. सो ये तमाम चीज़ें थी. अच्छा, हमें लगा, जब मैंने शुरू किया था, मुझे लगा कि फीमेल रोल मॉडल्स बहुत ज़रूरी हैं. ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कुछ अकम्पलिशमेंट्स हासिल की हैं, और कुछ ऐसी ख़वातीन हमने शुरू में सोचा हम ऐसी ख़वातीन को हाईलाइट करेंगे जो कि बहुत अननोन है, ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं हैं, मतलब वो कहीं से भी हो सकती हैं, किसी भी फील्ड से हो सकती हैं. लेकिन हम चाहते थे कि ओके, दे शुड बी रिलेटेबल, यानी कि आप उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सको, आपको लगे अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. राइट, तो ये और कर सकता हूँ. ये बाय एंड लार्ज ये प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट इज़ फॉर बोथ यंग मैन एंड वुमेन. क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमें नहीं पता कौन सी चॉइसेस अच्छी हैं हमारे लिए, कौन सी चॉइसेस बुरी हैं. हम इंस्पायर होना चाहते हैं लोगों से. तो द आइडिया वाज कि हम इस तरह के लोगों को ढूंढ के निकालेंगे. अब इवॉल्व हुआ बिकॉज मुझे लगा कि हमें ऐसी ख़वातीन भी देखनी है इस प्रोग्राम के अंदर, स्मैशिंग इट में, जो कि वाकई में बहुत कुछ अकम्पलिश कर चुकी हैं, जो कि फेमस हैं, जो कि नेशनली नोन है, इंटरनेशनली नोन है. क्यों? वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दैट इज़ द इंस्पिरेशन, राइट? एट टाइम्स यू वांट टू एस्पायर टू बिकम her. So today it gives me great pleasure to introduce Shandana. I'm actually going to add her to the screen because I see her. Assalamu alaikum. Hi. You have to unmute. Okay. Your screen is getting stuck. थोड़ा थोड़ा आपका screen stuck हो रही है, Shandana. Can you hear me though? Okay, I'm going to assume that you can hear me. All right, so ज़्यादा बेहतर होता है कि लोगों को उनके सामने introduce कराएं. This is a very embarrassing moment usually because somebody who's super accomplished, we have to tell everybody everything about her. But anyway, so the most important bit is that Shandana is playing an extremely important role in the political arena of Pakistan. She is a member of the National Assembly. She's a legal professional with extensive experience. That's how I actually know her. Back in the day when both of us were younger. I don't want to say we were really, we're really old. We're not that old still. But anyway, economic law policy, she's done quite a bit on that front. E-commerce की policy भी design की है. अभी भी different standing committees के ऊपर serve कर रही हैं. Okay, she's dropped off, I think. Signals का issue हो रहा है, so bear with me because this is normal internet connections in Pakistan. Actually, around the world. Yes, we keep blaming Pakistani internet. इतना भी बुरा हमारे हालात नहीं है, ठीक है, in the cities at least. Pure world में on and off people are struggling with the internet. So anyway, so to talk about Shandana a little bit more, right? So she's written on Pakistan's first IP framework, e-commerce policy. She's served as the Parliamentary Secretary for Commerce and Industry. She chairs the subcommittee on agricultural products, focusing on women, farmers, workers, and youth. जो पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स है ऑन SDG नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, वो उसके ऊपर भी काम कर रही हैं, और जो पाकिस्तान का फर्स्ट SDG का रोड मैप है उस पर भी काम कर रही हैं. पार्ट ऑफ दैट वर्क, जो उनका कुछ काम है वो इस लिहाज से भी फोकस्ड है, उनको एक रिजल्ट्स फॉर चाइल्ड मैरिजेस, restraint legislation. All right, and she also serves in the committees on industry and production, privatization, and planning and development. Okay, so I'm going to add Shandana with the hope that this works this time. Gee, Assalamualaikum. Assalamu alaikum. I think this is working now. All right, so glad that you could make it. I'm so sorry that I've put you to work, even though you just came back home. That's fine. That's fine. How are you? Very well, बिल्कुल ठीक. अच्छा Excellent. जी, so we want to know more about you. So Shandana Okay. कौन है? In your words, how would you describe Oh, yourself?
Is that a uh, difficulty? so no, I'll tell you something a bit facetious. The language, are we going to speak Urdu, English, mix of both? Okay, so yeah, mix of both because LinkedIn के ऊपर we do find that we've got more international speaker listeners, लेकिन hang in there Facebook के ऊपर भी हैं लोग, तो मेरा ख्याल है कि उर्दू में ज़्यादा बात कर लेते हैं और फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी, yeah? That's fine. So I'm a lawyer by profession, a trade lawyer. It's interesting, when I used to work in Peshawar lower courts and high courts, there used to be a sign, Darwazo ke bahar, wo kala ke. And I could never understand what it meant until I became a bit more older, let's put it that way. Baha BA used to be ball B. And I could never understand why every lawyer writes it that way. So technically, I'm a trade lawyer. I've done my master's in trade law as well. Hmm. Which has led me to my meeting. What led me to my meeting? I come from Peshawar. I come from a conservative area. It's very nice. In the last couple of the years was a war on terror. Then going backwards, I started working when I was 18. Your वक्त voice is था breaking up a बोर हो lot. जाते थे सुबह को शांदना की आवाज बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही we है. used to study law in the Okay, so your voice is breaking up a lot. We can't evenings. understand. I didn't know what to do with myself, so we used full So I miss the pre-COVID days when we could hear everyone. एक second ठहरे, I'm just calling you. One sec. oh, that's Okay, guys, so you have to bear with us. Like I said, the internet connection is acting up, but Anna is trying to log back on as soon as she can. All right, so while we're waiting, right, let me tell you a little anecdote. So I met, oh, there she is. Hang on one second. Let's see. okay. Yes. Okay. Are you settled? I yeah. Well, I keep on changing places to see if you This is guys. awesome. Yes, yes, Is yes. it This okay? is Great, excellent, uninterrupted अभी आवाज excellent. आ रही है. Okay, जी, so maybe start from the beginning. आप बता रही थी कि आप okay. पेशावर में रहती थी और I will start from the beginning. I'm a lawyer. I'm from Peshawar. I'm from, my father is from a large village just outside of Peshawar. I travel all over Pakistan as a young kid because of my father's job, changed schools frequently, ended up in law school, and then spent 4 years in Lahore in Connect College. Wanted to be a journalist, but there wasn't much scope for journalism at that time. It was newly post Zia and pre Musharraf days. And then I am here in front of you. I've got a very long history of working. I've been working since I was 18. My father, God bless his soul, was an incredible father in that sense. He used to push us to school and push us for work, even though most girls end up wanting a father figure who will allow them to work. My father was the sort who forced us to study and forced us to work. He felt that we needed to be independent. And so, alhamdulillah, it paid off. And I enjoyed school, I enjoyed learning. I was a bit of a nerd. So that's never been a problem. But the journey here hasn't been the smoothest because I come from Peshawar, I come from Pakistan, and as you said earlier, I was listening to you that we're always looking for role models. We're always looking for people to either inspire us or encourage us.
At the time, there weren't that many people. As I said, part of it was being conservative in society, the media, and internet, of course, wasn't as frequently available as it is today. In fact, at the time that I was in school, there was no concept of internet except perhaps for the military and for other sensitive agencies. So, Alhamdulillah, it's been a good journey. It's been a lot of learning. बहुत funny चीज़ें भी बीच में हुई हैं. And अल्लाह का शुक्र, अभी भी कभी कभी weird लगता है. We had falling out today, a very important meeting जिसमें I never lose my temper. But I lost my temper today. I wasn't rude, I didn't misbehave, but in the meeting, people saw my temper. And I was just thinking, all right, this is a question I face from myself, when do I stop growing up? And I was hoping I'm all grown up and I'm mature, but hota hai. It was a Pakistan issue. Some people are trying to harm Pakistan, and it wasn't fun listening to that nonsense. So there are days. So here I am in front of you. Okay, A but how would you mishmash of many normally? things. No, but you're absolutely right? That every day is almost like a learning curve क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और अगर हम सुने अपने आप को, अगर हम listening की power रखते हैं तो then we learn more about ourselves, right? And we know what ticks us off, what doesn't. Uh, and we also learn कि कौन सी चीजें हमें avoid करनी है because they stop us from moving ahead, right? And at the end of the day, we have to keep moving ahead. Actually, जिंदगी में, for your viewers, for young Pakistanis, जिंदगी में आप अपने को ही पहचानने में वक्त लगाते हैं, दूसरों को आप आसानी से पहचान जाते हैं, खुद को पहचानने में देर लगती है. It's very natural. ये अल्लाह का एक डिजाइन सिस्टम है. लेकिन you know what you said, I've tried all my life to avoid conflict, anger, and risks. I'm not a big risk taker. And yet, I find that life will meet you the way it wants to meet you. And whether you call it Mother Nature, whether you call it God, whether you call it whatever you feel like, you will run into what you run away from. And that is the biggest lesson I've learned in life. आप जिस चीज़ से घबराते हो, वही अल्लाह ताला आपके सामने लेके आता है to strengthen you. आप मैं रिस्क से भागती हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट से भागती हूँ, मैं लड़ाई से भागती हूँ और मैं उसी में फंस जाती हूँ. ना चाहते हुए भी. So the lesson I learned today was that it's okay to get angry. I was desperately searching for guidance. कि मैंने जो किया मैंने सही किया. It's a small anecdote, but I was trying to figure out where I went wrong. I asked this question of myself the whole day. Where did I go wrong? And I realized I hadn't gone wrong. It's a new paradigm. I'm a public representative, but what I'd forgotten is that I'm also a defender of Pakistan. Now, when I met you in Geneva, that was my job. My job was to defend Pakistan's offensive and defensive interests, economic interests. लेकिन पाकिस्तान में मैं ये भूल गई थी, मैं अपने आप को इतना वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रोल में घूम गई हूँ कि मैं भूल गई थी कि कुछ ऐसे फोरा हैं जहाँ पे मुझे पाकिस्तान को डिफेंड भी करना होगा, पाकिस्तानियों का दिफा करना होगा और मुझे वो काम करना होगा जो पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी होगी. वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक हर वो पाकिस्तानी जो आजकल पाकिस्तान के लिए रिज़्क कमाने की कोशिश में है, अपनी फैमिली के लिए रिज़्क कमाने की कोशिश में है, वो सब हम पाकिस्तान के, आप मुजाहिद कह लो, पाकिस्तान के फौजी कह लो, पाकिस्तान के फाइटर्स कह लो, और स्पेशली इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, each one of us is a tiny little drop in this ocean called Pakistan. So every day is a new day, and it's interesting. It's difficult, but it's interesting. Interesting is something जो कि हम हमेशा पाकिस्तान से expect कर सकते हैं. I think interesting is the right word. That's how you have to take it. But tell me, Absolutely. I want our viewers to, Yeah. go and understand who Shandana is today. और कल वाली शांदाना कैसी थी और क्या हुआ कि शांदाना अब चेंज होते होते this is the position that you are at today, right? So maybe map out, if you want to map out your professional journey, your personal journey, A uh, transition? the Okay. transition. Yes. Okay. Okay. So when I was 15, I went off to Connect College in Lahore as a student. As I told you, my father, he was in government, and so he used to get a lot of postings. And because of that, we saw North Waziristan, we saw Malakand, we saw areas of Pakistan people usually don't go to. Also coming from KP, and my father had this mission to ensure, and I didn't understand this when I was young, हमारे गांव में लोग बुर्के पहनते थे.
अभी भी ख़वातीन पहनती हैं। बाबा जब मैं ये मैं इसलिए जंप छोटी सी मारी कि बचपन में उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं। तो क्योंकि हम स्कूल जाते थे नॉर्मल लोगों की तरह, हमने थे गांव के लेकिन बुर्का नहीं पहना, चादर पहनते थे क्योंकि वो कस्टमरी है पेशावर में। तो जब मैं लॉ करके जाने लगी अदालत में तो आई फॉट विद हिम कि आई विल नॉट गो टू कोर्ट बिकॉज कोर्ट में मेरे गांव वाले बंदे हैं, मैं उनके सामने पर्दा करती हूँ। अब मैं अदालत में आऊँगी, they'll see my face, they'll see my head uncovered, ये कैसी बात है। And he said कि लो 3 years old ये मैंने फैसला किया था कि मैं गांव के बच्चों को नहीं कह सकता कि आप चादरें छोड़ें, आप बुर्के छोड़ें, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो कह सकता हूँ कि आप मर्दों के साथ बैठ के काम करें, चादर मत छोड़ें, पर्दा मत छोड़ें। लेकिन मैं अपनी बेटी को एग्जाम्पल बना सकता हूँ। मैं मुनाफिक नहीं बन सकता कि पराई बेटियों को ऑर्डर्स दूँ। मैं अपनी बेटी से स्टार्ट करूँगा। सो ही वेटेड 30 years for his own children to come out to the field. और अल्हम्दुलिल्लाह one impact of that was कि मेरे गांव में अल्लाह का शुक्र है अब लड़कियां नर्सेस भी हैं, इंजीनियर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, उसी पर्दे में है क्योंकि उनकी मर्जी है वो पर्दा करना, लेकिन उनको अब तालीम से कोई नहीं रोक सकता। नौकरियां करती हैं, LHVs हैं, पोलियो एजेंट्स हैं। सो अल्लाह का शुक्र वो जो चेंज आनी थी सोसाइटी में वो लेक्चर से और NGO से नहीं आ सकती थी, वो इंटरनली आनी थी। And one brave man had to take that plunge to say that my daughter will do for herself initially as he deemed fit, which is to get an education, to get a job, and to work with men. All three that I was against the last one. I wanted a white collar job. I wanted to work in a bank. So मुझे बहुत clean, neat दुनिया दिखे. But he said nothing doing. The world is a difficult place for 70% of Pakistanis. So you have to be out there with them. And it is hard. I can tell you, जब आप एक pampered घर से, एक privileged घर से बाहर जाते हैं और दुनिया की तकलीफ देखते हैं ना, I was young. I was 18 when that happened. तो 15 in fact. So इंसान ज़रा शॉक में भी होता है कि वो दुनिया नहीं जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ. But since the age of 15, I was exposed to it. I'll be 45 in December. So 30 years of being on the road. अल्लाह का शुक्र है, बहुत सीखा. Coming back to Canade College, 4 साल hostelite in Canade, learning a new culture. I was from Peshawar, पंजाब का culture सीखा. सिंध की बहुत बच्चियाँ थीं, बलूचिस्तान की थी, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा. मेल्टिंग पॉट है पाकिस्तान वाकई ही. Different ज़बानें, different सकाफ़तें, different food. That was the yummiest part. Different experiences growing up. तकालीफ दुनिया की देखी, औरतों का struggle देखा, बहुत कुछ देखा. And then a leapfrog to Peshawar Law School किया, फिर 2 साल नौकरी की, 3 साल डिज़ाइनिंग की. as शौक भी था, पॉकेट मनी भी Designing अच्छी as in थी. fashion designing. फिर I left for Cambridge. Yeah, because it's the easiest thing to do, right? Oh, okay. अफगान वॉर अभी सेटल नहीं हुई थी, कपड़ा स्मगल होके सस्ता बहुत आता था, फ्री लेबर थी, वॉर था, Okay. so you needed people needed jobs. So I helped set up jobs. अल्लाह का शुक्र है. There was no game plan. It was just something that was interesting, and I thought let's do it, and it didn't require much financing. It was pretty successful till I left for England in 2001. As a student, I was lucky. I got a full scholarship to Cambridge, and I studied trade law. And then उसके बाद से I came back to Pakistan. 9/11 had just happened. So we were a little bit exhausted. We were already reeling from our own war on terror. And then, because you know, we've had Afghanistan as a neighbor for 40 years. So we were battling that, and then came 9/11, wo ek aur war start ho gayi. And so our areas were in some sense besieged. Cambridge was a difficult year for me, but it was one of the most beautiful years of my life because learning बहुत ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी में. लेकिन बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया का स्टार्ट था, पाकिस्तान की बुराइयाँ. I have to be very honest, मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत नहीं किया कि, और एक स्टोरी है which I want to tell your viewers, जो मुझे हिला के उसने रख दिया. हमारे एक सोसाइटी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जिस दिन मैं लैंड की, came to the airport to receive me. Then they came and took me from the railway station. They helped me set my room. They helped me understand, navigate the city, shopping कैसे करनी है. I was not used to many things. This was my first time alone abroad without my family, without my parents. और उन ख़वातीन ने बहुत हमारी मदद की. बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी LGBTQ सोसाइटी थी. And I didn't know how to react to that. So I went and I growing up in a conservative household, conservative country, and this is back in '91. So that's quite a long time ago now. And I went, and that'll be what, 30 years? 2001, sorry.
Is it 20 years or 30 years? 20 20, years 20 next years. year. 20 years next year. So I went to the chaplain, Cambridge का जो chaplain थे, मुसलमान chaplain, वो भी अंग्रेज थे, but he had converted to Islam some 40-50 years ago. So उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि इस्लाम की क्या रूलिंग्स हैं, कि मैं LGBTQ स्टूडेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करूं, मैं उनकी इज्जत कर सकती हूँ कि नहीं, मैं उनको इमेजिन बेसिक क्वेश्चन, बट यंग थे तो नहीं पता था, और दीन को भी नहीं, दीन या खुदा के बताए हुए रस्तों से दूर भी नहीं जाना चाहते थे, और उनके एहसान भी था, समझ नहीं आ रही थी. सो आई आस्क्ड देम कि मैं क्या करूं, व्हाट इज़ द इस्लामिक वे. कहते इस्लामिक वे ये है कि आप नंबर 1 नॉन जजमेंटल हो, किसी के काम में आपका काम नहीं है. नंबर 2, आपके ऊपर किसी ने एहसान किया है, और जब एहसान किया है एज अ मुस्लिम कोड ऑफ ऑनर, आप अगर उसके एहसान का जो एहसान वापस नहीं कर सकते, आप उसकी एहसान की तलाफी भी नहीं कर सकते. और तीसरा, हर इंसान जो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने सबको बनाया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं. तमाम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं. देयरफॉर आपने तमाम की बेसिक डिनोमिनेटर इज्जत का है, एंड दैट इज़ अ डे आई विल नेवर फॉरगेट. मुझे आज तक ये नहीं भूला कि पाकिस्तान में एटलीस्ट मेरे बहुत अच्छे असातिज़ा थे, लेकिन ये एक नई किस्म की लर्निंग थी. और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद नए नए एक्सपीरियंसेस आए, नई नई बातें सुनने को मिली, ऐसे ऐसे लोग मिले. फॉर एग्जांपल हमारी जो कैम्ब्रिज की यूनिटेरियन मुस्लिम सोसाइटी थी, हमें कभी भी मस्जिद फारिग नहीं मिलती थी, क्योंकि हमें मस्जिद में इवेंट्स करने होते थे इस्लामिक सोसाइटी के. सो दुनिया के मुसलमान थे, और सबसे अगर एक जगह हमें हर हफ्ते मिलती थी, वो थी यूनिटेरियन चर्च, खूबसूरत चर्च. और हमेशा या फ़लस्तीनियों को चाहिए होती थी, फ़लस्तीन सोसाइटी को, या कश्मीर सोसाइटी को, इस्लाम सोसाइटी को, और हमें वो मिल जाती थी. सो अल्लाह का शुक्र, एज अ स्टूडेंट आई कैन से कि जितना मैंने लोगों की तरफ से तहम्मुल सीखा, जो मैंने लोगों से सब्र सीखा, टॉलरेंस सीखा, ये चीज़ मुझे याद आई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि सारी दुनिया के साथ जब तक वो आपके उदुवन मुबीन जो तमाम सूरतों में खुले दुश्मन नहीं होते, आपने उनकी इज्जत भी करनी है, उनकी डिफरेंसेस को भी टॉलरेट करना है. और जो काम आपके ख्याल में वो करते जो गैर इस्लामी हैं, वो मुझे अपने चैपलिन के अल्फाज याद है, जान मोहम्मद बाग, कि आप किसी पे जजमेंट कॉल, आपको अल्लाह ताला की कुछ सिफात हैं, जिनमें से एक सिफत है मुतकब्बिर, यानी द कंप्लीट वन. Only Allah is complete. You have no right to judge anyone. बस बात खत्म. So it helped me. It helped me so much living in Europe. Fast forward, I went back to Pakistan, worked 3 years with UNDP, with trade law departments, and then I got a chance for an internship in Geneva in 2006. When I got to Geneva, it turned out it wasn't an internship at all. It was a full-time job. And that's when I met your lovely sister. I met you. You were young students there. And Allah ka shukr, no looking back. I was at that time a legal advisor for Pakistan on legal matters pertaining to the World Trade Organization. So issues like fisheries, issues like anti-dumping, what we call the rules negotiations, issues like trade and environment, trade and women, trade and agriculture, trade and industry, non-market access, intellectual property rights. So it was a difficult time because although I knew these things, I'd learned them at Cambridge, I'd practiced them in Pakistan, but defending Pakistan was a completely new ball game. So Alhamdulillah, that was an incredible chapter. I moved back to Pakistan in 2013 after 7 years because my father had just joined Parliament and he wasn't very well. So some sixth sense told me that I don't know how long he has to live. I should move back and be with him. And Alhamdulillah, I was very lucky at 3.5 very beautiful years with him. He passed on in 2017. So God was very kind. Us tarah se ki I was able to spend time with him. And then come fast forward to 2018, I was asked to send my CV one night before the final deadline of National Assembly election papers. And I wasn't very keen, to be honest. As I told you, I thought I'm a, rough and tough woman. Turns out I was a burger bacha. I just wanted my 9 to 5 नौकरी, मुझे और कुछ नहीं करना, प्लीज मुझे आराम से रहने दें. एंड मुझे डांट पड़ गई कि आप कहती तो हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, बट नज़र नहीं आता. एंड आई रियलाइज्ड कि the man in question, असद उमर साहब और बाब शहजाद साहब and the Prime Minister, वो तब CVs रिव्यू कर रहे थे, तो मेरी CV मांगी गई. I wasn't a party worker. मुझे टेक्नोक्रेट की ग्राउंड्स पे लिया, and here I am in front of you today.
डांट खा के एमएनए बन गई. Dance Academy, I like that. I So want to stop for a second and ask you something. So when you came to Geneva, it was for an internship, ठीक है? तो अब थोड़ा सा career side पे भी ये question है, ठीक है? Because obviously आप पहले से career कर रही थी, pursue कर जी. रही थी, काम कर रही थी. It must have been a difficult decision, or was it not so difficult? कि okay, you're going off on a post which is actually called an internship, ठीक है? वो काम बहुत ज़्यादा था, it evolved into something else. But उस time पे at least you decided to quit everything and go and pursue an internship. So how did you feel about it? And लोगों से क्या सुनने को मिला कि क्यों ये कर रही हो? मत करो आप ये कुछ और decision. What happened? Okay, so this wasn't the difficult decision. The difficult decision was going to Canada when I was 15. वो बहुत vulnerable age होती है. And God bless my father's soul and my mother's spirit. वो अभी भी जिंदा है मेरी वालदा, and she put her foot down. She said मेरी बेटी जाएगी. और बहुत लोगों ने पेरेंट्स को रोका कि छोटी बच्ची है, लाहौर का कल्चर कैसा है बच्चियों के लिए, और अकेले शहर कैसी रहेगी? अजीब How सा will she है और लोग secure? अजीब से हैं, अकेले कैसे रहेगी, सेफ्टी और कल्चरल डिफरेंसेस. बट माय फादर सेड नहीं, मैं सोसाइटी से इसलिए नहीं डरता क्योंकि सोसाइटी के रूल्स मैंने ही सेट किए हैं. आई ट्रस्ट द सोसाइटी दैट आई लिव इन, और आई मे नॉट ट्रस्ट द सोसाइटी दैट आई लिव इन, बट आई ट्रस्ट माई चाइल्ड. मैंने अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा किया कि मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ. एंड ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस के बच्चे जिस रूल से आप घर में रहते हो उधर ही वहां रहो तो सब कुछ ठीक रहेगा. So that was a hard decision as a 15-year-old leaving a house. That's a very vulnerable age. Fast forward to Cambridge again. My father, my parents, both of them encouraged me कि बच्चे खुदा पे भरोसा करो और खुद पे भरोसा करो. हमने आपको बड़ा किया है, हम पे आपको भरोसा है. तो मैं डरती थी, वो नहीं डरते थे. मैं डरती थी कि शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो नहीं डरते थे. फिर सेम थिंग फॉर जिनीवा. जब ये जॉब ऑफर आई, आई थॉट इट्स एन इंटर्न्स जॉब, बट इट वाजंट. इट वाज अ फुल टाइम जॉब. लेकिन by that time, since I'd been to Cambridge, I had studied WTO law, and it was only the logical thing to do. Naturally, डर था मुझे कि मैं वहाँ क्या करूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, met a lovely, lovely lady, Pakistani, Saman Ehsan. She now works in UN Women. उनसे मैं पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा मिली before I moved to Switzerland. और वो तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम कर रही थी और मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप आएँ, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, लड़कियां खुश होती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक इशू सेफ्टी का होता है लड़कियों का, कि हम जहाँ जाएँ हम सेफ रहे. वालिदैन के बगैर अगर जा रही हैं तो अल्लाह का शुक्र है मुझे वहाँ से भी बहुत इनकरेजमेंट मिली. वालिद ने भी बहुत इनकरेज किया कि डरना नहीं है, लड़ना है. और मैं हमेशा डरती थी, अभी भी डरती हूँ. मुझे आई टोल्ड यू, मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है. और अल्लाह ताला मैंने देखा वही करता है कि जिस चीज़ से आप डरते हो आप वही फंस जाते हो. पश्तो, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन उर्दू, बट पश्तो में कहते हैं जे अबाजोल बराजे, कि जिस चीज़ से आप डरते हो उसको वही आपको पकड़ लेती है. सो अल्लाह का शुक्र. मुझे ऐसे ऐसे इतनी दिन होते पछतानी थे कि रात आती. 11 बजे घर आती थी. हाँ, मैं रात 11 बजे आ रही होती थी, बस में, ट्रेन में, जहाज में, कहीं से आना होता था. 12 बजे आती थी. बट अल्लाह का शुक्र, आई कैन नॉट रिकाउंट अ सिंगल नेगेटिव एक्सपीरियंस टू यू. अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन, एंड आई थिंक उससे आपकी ईमान भी स्ट्रेंथन हो जाता है. True. जी. देखो, at the end of the day, I'm just saying कि Geneva is Geneva. Obviously, at that time जब हम उधर रहते थे तो वो एक different city भी था. अब apparently इतना ज़्यादा safe नहीं है, whatever it is, it's become different. लेकिन उस अच्छा, time पे तो अच्छा. obviously walk हाँ, back भी करते थे ना, because cabs किसने लेनी होती थी, right? I don't think I ever took a बिल्कुल cab. बिल्कुल नहीं. We वॉक just बैक walked. किया नहीं, कैब वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन. वो तो बजट में ही नहीं होता था. सो Absolutely right. बस ले लो, ट्रेन ले लो, Yeah, अल्लाह का yeah. ट्रैम ले लो. बट अल्लाह का शुक्र, आई सेड आई हैव ओनली गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. और मैं यही बात, एंड आई देखें इस वक्त अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह ने मुझे कुछ अभी हाथ में दे तो देना नहीं है उनकी तारीफ करने के. लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे किसी ने एक दफ़ा हदीस कुदसी सुनाई थी और उससे मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी. देयर इज अ बुक रिटन बाय मुराटा एंड चिटिक on Islam. It's a beautiful. There were many books on Islam. ये बहुत खूबसूरत किताब है. और इस बुक में एक हदीस कुदसी थी जिससे मेरा दिल स्ट्रॉन्ग हो गया. वो हदीस कुदसी ये थी कि आप हमेशा अल्लाह ताला को उस नज़रों से देखिए जो आपको सही लगता है. फॉर इंस्टेंस, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं. इफ़ यू सी अल्लाह एज रहमान रहीम, ही मीट्स यू एज रहमान रहीम. If you see Allah as Halim Latif, the sublime one, the gentle one, He will meet you as Halim and Latif. But if you choose to look at Allah as Qahar and Jabbar, then Allah meets you in that mode, because Allah, और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला is the ultimate democrat. वो इंसान को फुल आज़ादी, फुल पावर और फुल देते हैं, the full, how do you say, decision making ability. And hence जो एक बात है कि
man is superior to angels simply because you have the power of choice. But I don't think God only gives us the power of choice. Society doesn't, definitely Yeah. not. Yeah. Culture doesn't, but Hmm. God does. And so for me, the biggest attraction in Islam has always been that God gives you freedom to be Hmm. yourself. I've never found that freedom in any society, be it the West or be it the East. Uh, in the West has freedom, but it's a limited sort of freedom. And our part of the world, the East, has even less freedom to be yourself. They have a limited access to freedom. But I find that whatever liberates you is your true friend. And I found my true friend to be God. So Alhamdulillah, strength मुझे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा एक source थी मेरी है मेरी और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा इनफॉर्मल हो गई हूँ खुदा सुभान ताला के साथ कभी लड़ती भी हूँ ये क्या किया आपने ये क्या किया फिर then I have to remind myself stop it. So I think you always have to have a source of strength जिसके साथ आपकी freedom हो जिसके साथ आपको कॉन्फिडेंस हो और ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप हो भाई बहन हो हर बंदा एक जैसे हालात में नहीं पैदा होता हर बंदा एक जैसे हालात में ज़िंदगी नहीं गुजारता हर बंदा एक जगह बड़ा नहीं होता each one of us finds our strength in something else and I know this I've seen through human nature that there is always a source of strength you just have to find it Yeah. And there again, it it's goes back to always there finding your own inner strength and inner self as well, right? Because for different people, it will be talking absolutely to God. no For your other inner people, self is connected to it yeah, yeah absolutely. Some it's people will go nature into for some people nature. it's science and you Absolutely. Absolutely. When exactly nature Zinfa, channeling. exactly and what happens is your inner self Hmm. your transcendent part is always connected to that source of strength so those who don't believe in God or those who don't believe in religion हैं ऐसे बहुत सारे लोग they have their own source of strength and it comes from the same source but होता ये है कि वो उसको ढूंढ लेते हैं Hmm. आजकल मेरी बेटी by the way, so lots of things which are resonating, right? आजकल मेरी बेटी बड़े tough questions पूछ रही होती है. So what about people who don't believe in God? Why don't they believe in God? What if, how are you supposed to behave with them? Right? So similar questions and she's just 10 years old, but obviously आजकल के बच्चे थोड़े जल्दी difficult questions शायद सोचने लगते हैं. I don't know what it is. Maybe it's all she's the 10 exposure that we already get. She's oh 10 my already. god she's 10 So she's already not doing that. And then mashallah also, well do जो tell आप, her go ahead. You're saying sorry something. go You're ahead giving a, no, you're giving a message for Ishal. Happily and going I to was going take to it. say I will. I was going to say, do tell Ishel. She's young for it now, but आप उसको बता देना कि there's a ayat in the Quran for those people who don't believe in God. It's very interesting. खुदा खुद address करता है कि for those of you who don't believe in me, travel the earth and you will see the signs that those Absolutely. who came before you have left behind. तो अल्लाह Hmm. ताला भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानते. अगर आप अल्लाह ताला फोर्स नहीं करता किसी को ईमान पे अल्लाह ताला इनविटेशन देते हैं हमेशा Hmm. बिलीफ की फोर्स नहीं है Hmm. और जब कुरान में एक चीज आ It's जाती है so उससे आपको interesting. सुकून आ जाता है कि योर गॉड इज अ सुप्रीमली कॉन्फिडेंट गॉड So back in Geneva, so क्योंकि अभी हम बातें कर रहे थे, I used to have a colleague of mine जो कि student मतलब student fellow जो कि who was an atheist, right? And I remember still the first time I went to Aiguille de Midi, and when you climb up and you're like, you're looking at this beautiful scenery, right? वो पूरा का पूरा खूबसूरत white mountain है, multiple mountains हैं आपके around, और इतनी खूबसूरती है ना, I was just like, this boy just needs to come here. The minute he comes up and he sees all of this, I'm sure it'll have an impact on him, right? So this is like, I don't know, when I'm 19 or something, thinking like this. But okay, so we've got a question from Filza. You know Filza, I know Filza. So okay, Filza is saying, how do you feel to be representing Pakistan in in government with a lady like you who is so pure and true and patriotic? It must be a struggle. So it's a bit of a provocative question, you know. But I think what she's trying to say is obviously, well, या let's rephrase it, okay? Thoda sa, because what I do want to talk about is how many women in leadership we've got, and how is it on a day-to-day basis maneuvering the entire politics, making yourself heard, while still, being true to what your values are, right? So, जैसे आपने कहा कि आपको लड़ना इतना अच्छा नहीं लगता, आपको, and we see a lot of that on TV all the time, right? People fighting like lunatics, which is totally not the kind of education that we want to provide to our children. So TV पे जो चल रहा हो आप बेशक switch off कर सकते हो, but news is something which everybody watches, right? Or you don't think that it is something which has to be switched off because you think this is family. It's okay for the entire family to watch, except it's not, because a lot of times it's teaching you a lot of anger, rage, fighting back, interrupting people, arguing with one another, not respecting each other's thoughts, etc., etc. Intolerance, bottom line. So let's rephrase it. Let's ask you a few questions which are okay. You came in, you obviously want to make a difference. Dant kha ke aap bani ho, theek hai?
And obviously in your career, जो मैं शुरू में बता भी रही थी, you've had that impact, ठीक है? But how has it been maneuvering the entire, scenario? How do you handle it? I think, and that's the whole point, perhaps the word maneuver is the right word. Some people live their entire lives maneuvering and then they get tired. And when they get tired, they realize that it was never worth it. I think the hardest thing to do in life is being yourself. खुद ही से सच्चा रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वही असली ज़िंदगी है, खुद ही से सच्चा रहना. और असेंबली में जब मैं नेचुरली शुरू में बहुत मसले मसाइल इतने नहीं थे जितनी समझ नहीं आती थी. आप ऐसे ऐसे लोग थे जो 8-8-10 दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस रह चुके थे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के थे. हम यंग हैं, अलेजिडली लेफ्टिस्ट्स हैं, मार्क्सिस्ट हैं, जो भी है कह लें. इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, बाकी दुनिया देखी हुई है. हम फ्यूडलिज्म में नहीं बिलीव करते. हम गुर्बत एज अ वे ऑफ लिविंग नहीं बिलीव करते. वी बिलीव कि हर कोई एक जैसा है, हमारा स्टाफ हमारी तरह रहे, जिस तरह यूरोप में होते हैं, जिस तरह अमेरिका में होते हैं, जो पर्सोनिफिकेशन है इस्लाम की. तो अब जब यहाँ पे आते हो यू रियलाइज कि हम बहुत सारे लोग इस्लाम भूल चुके हैं और हम लोग अपना कल्चर के नाम पे बहुत सारे गुनाह करते हैं, सकाफत के नाम पे. सो उसको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, बट आई रियलाइज दैट आई वाज नॉट गोइंग टू एडजस्ट. So I gave up adjusting. And I sort of fought against the system. I still fight against the system on a daily basis, which doesn't make me very popular, but I don't care. I've come to the conclusion I genuinely don't care. If people don't like me, it's okay. मैं इलेक्शन तो लड़ने आई नहीं हूँ, मैं तो रिजर्व में नहीं थी. अगर लोगों में ना पसंद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे एक ड्यूटी दी गई है. आप जब ओथ लेते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पे और कुरान पे, जिस दिन आप MNA बनते हैं, तो उस दिन आप बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के. उन कस्मों को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप लोगों को फिर खुश नहीं करेंगे, आप लोगों को नाराज़ करेंगे, आप लोगों से झगड़ा मोल लेंगे जो आपसे सीनियर होंगे, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे. वो कहेंगे जी आप किधर से आ गए, और आप जवाब नहीं देते. मैं जवाब नहीं देती, मैं काम करती. मुझे जवाब देने का भी शौक नहीं है. मज़ा तो बहुत आता है, दिल ठंडा हो जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है उसका. उससे पेरेंट्स की वो जो अपब्रिंगिंग आता थी कि ज़बान दराज़ी नहीं करते पड़ोस Absolutely से, right. ज़बान दराज़ी नहीं करते Absolutely. हम. It clashes. हाँ, It राइट. clashes with everything that you're taught हम as जो a person करते when you grow up. एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली तो हम ये करते हैं कि फिर हम काम करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और हम इतना काम करते हैं कि हम थक जाते हैं काम कर करके. और हम वी आर ट्राइंग टू चेंज पाकिस्तान वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम. बिकॉज आई नो कि आज जो एक हम मेटाफोरिकल रेलवे ट्रैक्स डालेंगे, वो इंशाल्लाह फ्यूचर बदलेगा. जो फ्रस्ट्रेशन, जो तकलीफ मुझे हुई है मेरी तालीम में, मेरी जॉब में, मेरे एक्सपीरियंसेस में एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज अ लॉयर, एज अ टीचर. आई हैव आल्सो टॉट लॉ टू लॉ स्कूल स्टूडेंट्स. सो वो सारी चीज़ें किसी ना किसी दिन किसी और के काम आएंगी. जब ये सोचती हूँ तो सुकून आ जाता है, बिकॉज हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिन पर हमें बहुत नाज है, बहुत फ़ख्र है. प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप हज़ार बातें कह सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जैसा बंदा, जो थोड़ी बहुत मेरी इंटरेक्शन हुई है, जितना उनमें सब्र है और पेशेंस है, you can't begin to imagine कि वो कितने, being the prime minister of this country, आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं और वो तहम्मुल से और सब्र से सुनते हैं. कोई ईगो ट्रिप नहीं होती है, उनको गुस्सा नहीं आता कि मैं PMO और मैं आप कैसे अपनी बात कर रही. नो, आराम से सुनते हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. कोविड पे डिसएग्रीमेंट थी, बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर को फोर्स कर रहे थे कि आप प्लीज़ फुल लॉकडाउन करें. ही सेड आई विल नॉट. मैं अपने लोगों को, अगर कोविड से नहीं तो गुर्बत से मर जाएंगे, ये नहीं हो सकता. और मैं एलिट्स के लिए कभी भी नहीं करूँगा. I have to do it for all of Pakistan, and took a lot of strength, and we stood behind him. A lot of people mocked him, doubted him. He said, "No, मेरे ईमान है कि I'm on the right path." He was doing the science part, and he was doing the faith part. फिर सैयद फ़खर इमाम साहब, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, शफ़क़त महमूद, असद उमर साहब, countless स्पीकर असद कैसर साहब तो probably top of the list, because वो इतना काम कर रहे हैं कौम के लिए, एग्रीकल्चर पे भी, पाक अफ़गान रिलेशंस पे भी, ट्रेड पे भी, एम्प्लॉयमेंट पे भी. So these are certain people who then inspire you. You realize कि नहीं, इन लोगों ने ज़िंदगी पाकिस्तान को डिवोट की है. So then हम भी कर सकते हैं. हमें भी लगता है कि शायद हम कल को कुछ चेंज ले आए इंशाल्लाह. डर लगता है, बड़ी बड़ी बातें हैं. अब जब उस ऐवान में जाते हो, इधर उधर देखते हो, आपको यकीन नहीं आता कि यू सिटिंग विद ऑल दीज पीपल जिनके नाम सुने हैं, जिनकी पर्सनालिटीज़ जानी मानी. अपोजिशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मैं बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और वेरी वेरी प्रो पाकिस्तान है. ठीक है, अपनी पार्टी का नज़रिया उनका अलग होगा. सो अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे लोगों के साथ मिलते हो तो आपको थोड़ी सी सब्र आ जाती है. यू फील यूर कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एंड यू विल डिलीवर इंशाल्लाह.
That's such a strong and beautiful message, Shandana. I'm glad that you actually did what the other people were asking you to do. I'm so glad, and I'm so glad you got selected as well. अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ कि कोई messages for थैंक other यू women. No, no, जी I don't know, I'm a very candid person also, and I think जो एक आपने point कहा है ना, I think this is very important. तो जल्दी से थोड़ा सा side पे बात कर रही हूँ, but when you're younger, हाँ जब आप छोटे होते हैं, कोई एक particular age में, जब आप छोटे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं करते because you think लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, जी what will happen, etc. But then बिल्कुल when you grow up, at a certain point in time, again it comes with owning yourself, जो आप point कह रही थी, बहुत true point है, valid या point है. But at the same time, you also realize कि या लोगों ने तो people weren't even talking about you, right? Because people were so busy doing other things, or even if they did talk about you, it was temporary and it passed, या right? So at the end of the day, I think जो one of the messages which I think you're leaving behind for us is really follow your own path, follow your destiny, follow your heart. Really go ahead and get out of your comfort zone, because जब आप comfort zone से बाहर आते हो तब हैव मेरे फेथ इन को योरसेल्फ शायद that's when it तब happens, जिंदगी right? स्टार्ट होती है Absolutely, and you learn and you grow, बिल्कुल and there are बिल्कुल other जिंदगी people who कंफर्ट जोन से बाहर ही स्टार्ट होती है and this is something, because I do this other एब्सोल्युटली session as well, right? So this is smashing it, but then there's another one called impacting lives. And each time I've met people, whether यस they're Pakistanis or non-Pakistanis, everybody has faith. Bottom line, there's some greater power that they believe in, something that they think there is divine power, या something that is directing them in a particular path, समथिंग right? And बिगर देन योरसेल्फ something bigger than yourself. Okay, so बिल्कुल coming back to बिल्कुल messages, ठीक है, कि certain messages जो आप देना चाह रही हैं, especially women को, but also young people, right, in general. ओके just one message जो मैं हर इस तरह के प्रोग्राम पे देती हूँ when I talk to young people, when I talk to people like me who are struggling for meaning. And that's essentially ज़िंदगी में हम मीनिंग ही ढूंढते हैं कि हम क्यों अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारा क्या मकसद था, हमने छोड़ के क्या जाना है. ये जो मैं एक मैसेज है जो बड़ी मुश्किल से सीखा, ज़िंदगी से सीखा, एक्सपीरियंस से किसी लेक्चर से नहीं सीखा. एंड दैट वाज कि हम एज अ पाकिस्तानी कौम, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पेशावर, हमारा जो इस्लामिक बैकग्राउंड है, हम बहुत मॉडेस्ट लोग होते हैं. और मैं तारीफ़ करूँगी इस मौके पे अपने पेरेंट्स की भी, अपनी सोसाइटी की भी, कि सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और हमें आजिज़ी सिखाई जाती है बचपन से. इनकिसारी, मियाँ रवि, गुजारा करें, बी काइंड, बी पेशेंट, बी टॉलरेंट. जिसमें जो चीज़ हम भूल जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबके साथ अच्छे हों. हम जो चीज़ भूल जाते हैं कि हम अपने अपनी कमर पे एक दफ़ा पैट करके देखें कि जब आप एक चीज़ कर चुके हो, छोटी हो या बड़ी हो, अपने Hmm. आप को थैंक यू कहें. अपनी Hmm. स्ट्रेंथ को थैंक यू करें, अपने ईमान को थैंक यू कहें कि आप जिस चीज़ से गुजरे, योर स्ट्रगल, व्हाट गॉट यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको एक्नॉलेज करें. बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, शो मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद को थैंक यू कहना पड़ेगा और गुड जॉब कहना पड़ेगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कर लिया, अल्लाह की मदद से, माँ बाप की मदद से, अपनी ताकत से, ज़माने की ताकत से, किसी बेनिफैक्टर की ताकत से, किसी दोस्त की ताकत से, किसी मेंटोर की ताकत से, लेकिन आपने किया तो अपने आप को एक्नॉलेज करें और उससे आगे बढ़ें. I think that's again a very beautiful message. Similar message startups को देती हूँ मैं काफी दफा, which is like you talk about it and you say look back and look at the distance that you've covered, because Yeah. obviously as startups, as young people who are Coverage trying to बिल्कुल do bigger things, you entrepreneurs और startups बहुत ही या ambitious भी होते हैं ना, तो कभी कभी वो जो मंजिल है वो बहुत दूर लगने लगती है. लेकिन उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि एवरी क्वार्टर लिटरली यू लुक बैक एंड यू सी कि अच्छा पहले मैं कहाँ था या कहाँ थी, और अब हम कितना डिस्टेंस आ गए हैं, ठीक है, कितना ज्यादा. एंड it's not एब्सोल्युटली something only that we practice, but apparently because a lot of people like Steve Jobs, so Steve Jobs used to practice it as well, right? So I mean there is बिल्कुल method to the madness. Acha ji, देयर Farhat इज Bhakti एब्सोल्युटली is saying, so she's saying that finding purpose in life itself is great blessing, greatest blessing, great words. We must acknowledge our achievements. Absolutely. Having said that, I think humility का जो आपका message है, that's very strong as well. I'm sure आपके parents भी कहते होंगे, at least मेरी मम ने बचपन से यही हमें सिखाया है कि भाई जब दरख्त में फल आ जाता है, जो फलदार होता है, तो वो दरख्त झुक भारी जाता हो जाता है और झुक जाता है है, बिल्कुल ठीक है. एंड दैट इज एक्चुअली द टाइम जब वो अकड़ के खड़ा हो सकता था कि ओ आई एम लाइक फ्रूट लेडन एंड आई मच मोर बिल्कुल वांट, बट इट डजंट, हाँ इट अकड़ बेंड. अकड़ अच्छा, अल्लाह को नहीं पसंद नहीं तो अकड़ bottom अल्लाह को line. नहीं और पसंद ये बिल्कुल and this I think is important to go back to our basic values, because that is something जो हमारे बचपन से हमें सिखाई जाती है, how to be humble. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो आगे बढ़ने की दौड़ में and एग्जैक्टली हम also भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया की वॉर में आई वुड से नहीं दोनों सोशल चीज. मीडिया नहीं है ये हमेशा से है सोशल मीडिया इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अस ये हम्म. हमेशा से था अब जरा ज्यादा नजर आ गया है
अच्छा जी, obviously फिल्जा की अमानत आई है, तो I'm just mentioning that here again and sharing it. Okay, so Shandana, tell me, I asked you right at the beginning, how would you describe yourself? तो आप कैसे अपने आप को describe करोगी? That's a very difficult question. Exactly, that's what I'm asking. It's not something I think about. Okay. What defines me? I'm a wonderful aunt. My nephews and nieces love me. My brothers and Mm-hmm. sisters hate me because I spoil their kids, but I'm a loving aunt. I'd like to think I'm a good daughter. Not a very good sister. Danti Bothi. I'm Mm-hmm. a. I used to be a very good friend. Now I'm a moderately good friend. I just don't have the time to be friends to anyone. So my friends are very patient with me, including our lovely Sam and Ehsan, including you. So मैं यही दुआ करती प्लीज मेरे साथ जरा सब्र करें गुजारा करें मेरे पास टाइम नहीं है but don't leave me. I'd like to think I'm blessed by God in terms of academics, so I can say I'm smart. But again, कुछ चीज़ें आमद पे होती हैं, which is just divine. So you can't take any credit. I don't take credit for it. I just describe it that I'd like to think I'm smart. Um, I do love my country. I feel sorry for my country. I think we deserve better. I am patriotic, and I've got a lot of faith. So I'm a person with faith and a person of hope. And I'm how do you say? I've got infectious positivity. My positivity Wow, will I love infect you. it. Okay. So I can say that. And considering, matlab, I asked you right at the beginning, and then you were still struggling, so you obviously know yourself to be able to share so much, right? So when usually लोगों से पूछती हूँ, they are quite stumped, and they're not really sure how to describe themselves. I think that's really It's important. difficult talking about yourself in our culture. We're not used to it. Hmm. Hmm. Okay, so tell me a last question. Okay, so Ji. tell me whatever your biggest mistake was, right? Which you want to publicly share because you think that you could have handled it differently, and maybe something that Personal or maybe something that you anything. Yeah, it doesn't matter. personal or professional? Okay. One of Professionally, both. Okay, one of both. Then sure. if So you're if you're professionally, I was shortlisted for the Rhodes Scholarship, hmm, and I never bothered to look for the papers because I thought मैं तो कभी shortlist हो ही नहीं सकती. जब shortlist की डेट गुजर गई, इंटरव्यू गुजर गया, मुझे वो papers मिल गए और मुझे बहुत तकलीफ हुई because I realized कि that was my dream to be a Rhodes Scholar. और मैं इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे खुद में कोई ईमान नहीं था उस ज़माने में. आई जस्ट थॉट कि मैं रोड स्कॉलर मुझे शॉर्टलिस्ट करेंगे, हो नहीं सकता. मैंने कागज़ ही नहीं ढूंढे, घर में पड़े हुए थे कागज़. मैं बहुत रोई थी उसके बाद, बहुत ज़्यादा रोई थी. hmm, एंड मुझे रियलाइज तब से मुझे धक्का लगा कि खुद पे ईमान नहीं है तो अल्लाह पे तो ईमान करो. hmm, दैट वाज माय फर्स्ट लेसन. hmm, दूसरा जो पर्सनली था, right before my father's death, one of my closest friends, I found out that she was a fortune hunter. She was only friends with me because my father was a member of parliament. And my hmm, father dies और वो मुझसे उसने बात करना छोड़ दी और मैं शॉक में चली गई. This is a friend जिसको मैंने पैसे भी लेंड किए थे जब उसका चाहते थे. मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, so I was a rich kid. और मैंने सब कुछ किया अपनी दोस्त के लिए. और जब मेरे वालिद की डेथ हो गई, उसने मुझे एक साल बात तक नहीं कि मेरा पूछा नहीं. I was like, okay, fine, दुनिया hmm. है, lesson learned. और the day I became an MNA उसकी कॉल आ गई कि सुना आप MNA बन रही है. And I was in shock. I Oh was like, wow. ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन ऐसे करता है. करते अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग करते हैं, ठीक है? सो हाँ, या तो फिर मैंने ये लेसन सीखा कि फिर मैंने सोचा कि आई शुड चेंज. बट आई वाज लाइक नहीं, ऐसे कभी नहीं करूंगी. मैंने गलती जरूर की, लेकिन इसका ये मत नहीं कि मैं बदल जाऊं. उस गलत इंसान, उस गंदे इंसान की वजह से मैं नहीं बदलूंगी. ये लेसन लर्न है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, बस जरा स्लो जाया करें. हम बचपन से बड़े शौकीन है, हर कोई बेस्ट फ्रेंड, हर किसी को घर ले जाओ, हर किसी को खाने खिलाओ, हर किसी को शॉपिंग ले जाओ. that नहीं, drives me like crazy, okay? Because at each दैट्स one of अस, my राइट, दैट्स places, ऑल ऑफ I अस. would एग्जैक्टली never, वैसे ही है. who not to invite, right? So before you know it, the whole world would be over. सारे एग्जैक्टली जानी हमारे कल्चर ऐसा है ना, हमें सिखाया जाता है कि घर Hmm, बड़ा दिल hmm, होना चाहिए, hmm, अच्छी सोच होनी चाहिए. बट ये भी सीख लिया कि नहीं, hmm, दुनिया हर एक जैसी नहीं है. और खैर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इससे बिटर नहीं होना, इससे hmm. लेसन ऑफ लाइफ तो बनाना है, बट इससे Maybe be सिनिकल नहीं wiser. बनना. हाँ, Hmm, नेगेटिव नहीं होना इसके बाद. सो hmm, बहुत सारे लेसन सीखे मैंने उससे. hmm. Okay, very good. I think being wiser, kind of trying to judge people better, I think that's important. By the way, on that note, very quickly, so जब मैं actually I would say मैं real world में आई हूँ 3 साल पहले, हाँ, जब मैंने Epiphany start की, क्योंकि उससे या पहले obviously you're working for the corporate world or NGOs or whatever you're working for, but always there is that whole umbrella of another organization, ठीक है? But when you step out into the real world, it's like a jungle out there, ठीक है?
and you learn so much. So proposals लिखे लोगों ने कहा proposal लिख दो, proposal लिखा thinking कि अच्छा वो भी जवाब आएगा, पता चला वो आगे जाके issue भी हो गया, सब कुछ हो गया, right? So that those are things which happen. But then at the end of the day, look, one of your approaches which I think I really abide by, put your head down, do the work. At some point in time वो कभी रहेगा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल मेहनत जो रिजल्ट की आएगा. result आएगा. And it's okay. Some people get it really early, really fast. But Yeah. you know, consistency is key, right? वो जो खरगोश और आपकी वो जो turtle की कछुआ. example है, बिल्कुल. कछुआ, बिल्कुल. exactly वही है ना, ठीक है? So anyway, okay. Absolutely. So Shandana, last few words before we let you go this time around. It was lovely to be here. I love your platform because you're doing something. This is about you, not about me. Entrepreneurship कराना, किसी का रिज़्क लगवाना, किसी की नौकरी लगवाना, किसी को राह रास्त पे लेके आना, दीन से हमारा किसी का कुछ लेना देना नहीं है, हमारे लोगों की दुनिया से लेना देना होता है. अगर आप किसी की दुनिया सही कर सकते हो, एक बेवा का घर सज सकता है, एक यतीम का घर सज सकता है, उसके हाथों के किसी और के रिज़्क लग सकता है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है. So please involve me and help me help you. I will. Oh yeah, for sure. Okay, thank you so Thank much, you. Shandana. It was Thank you. beautiful having you. I'm so sorry that Thank we you. don't meet enough, but I It's will fine. It's definitely. my fault. I told you I'm the bad guy. Okay, thank God, thank God. ठीक है. Because Uh, in my case, a lot of other people complain, right? But it's okay. I mean, look, at some point in time, we'll get older and we'll have less energy, and then who are we going to hang out with except, I each mean, other exactly. So तब yeah, आराम करेंगे. nobody आप else will काम want to. करेंगे. बिल्कुल. Anyway, so keep doing what you're doing. Mashallah, mashallah, Thank mashallah. you. May you shine even brighter. May you reach For all of us. greater heights, inshallah ta'ala, and may you keep inspiring all of us. Inshallah. I mean for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Okay. All right. Khudafis. Dafiz. Dafiz. Khudafis. Okay, guys, that was Shandana, and she signed off. Thank you so much for watching. Much, 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 much appreciated. I'll keep doing this, right? So I've been questioned कि अब तो दुनिया स्टार्ट हो गई है, लोग घर पे बैठ भी नहीं रहे. Why are you continuously doing what you're doing? I do it because I think even if one person is benefiting, and in this case, I could see a few, a few people watching. I think it's important. So I'll keep doing it. You will see us back. By the way, it's a very exciting announcement, huh? On the gaming side, so completely unrelated. Gaming के लिए on October 22nd, we are doing something really exciting. So mark your calendars. It's also going to be, at 8 p.m. So in Urdu now, Thursday को जुमरात को 22 अक्टूबर को हम कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने लगे हैं गेमिंग साइट पे जो कि अभी तक हमने नहीं की. So it is not the boring webinar. For some people, it's a boring webinar. Not for me. But anyway, so it's different. So watch out for that. And then at the end of this month, अक्टूबर के एंड में एक और बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है जो कि यंग लोगों के लिए है. स्पेशली जो लोग गेमिंग के करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए. ठीक है. So 22nd October and then the end of October. So keep watching. Thank you very much. Much appreciate the love and hope to see you guys again soon. Khuda Hafiz. Have a good night.